In this video, we'll study about the basics of transistors. So, I'll use the medium as like Hindi and English both, and I hope you guys benefit with this video. तो ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर का पूरा मतलब होता है ट्रांसफर रेजिस्टर। नाउ इसमें क्या है कि ट्रांजिस्टर में जब तुम लगा रहे हो मतलब पावर सप्लाई, तो क्या होता है कि ये जो तुम्हारा एमिटर बेस्ड जंक्शन है ये हमेशा फॉरवर्ड बायस्ड रहता है, और कलेक्टर बेस्ड जंक्शन जो रहता है दैट इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस्ड। तो फॉरवर्ड बायस्ड जो, अब इसको तुम आइसोलेट कर सकते हो दो डायोड सर्किट के हिसाब से, एक तुम्हारा जो फॉरवर्ड बायस्ड रहेगा और एक तुम्हारा जो रिवर्स बायस्ड रहेगा। अब डायोड का कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जब तुम फॉरवर्ड बायस पे रखते हो तो तुम्हारा जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी कम रहता है, और जब तुम रिवर्स बायस में रखते हो तो डायोड रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। तो लो रेजिस्टेंस रीजन से हाई रेजिस्टेंस रीजन तक ट्रांसफ़र करने का काम जो है वो ट्रांजिस्टर का रहता है। और ट्रांजिस्टर में तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। नाउ इसमें हर डिवाइस का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक है, इसलिए हम लोग एक्सचेंज नहीं कर सकते, जैसे कलेक्टर की जगह बेस का कनेक्शन लगाना, बेस की जगह एमिटर का कनेक्शन लगाना स्टफ। तो क्या रहता है प्रॉपर्टीज़? एमिटर का साइज जो होता है दैट्स मॉडरेट साइज्ड एंड हाईली डोप्ड। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड क्यों होता है इसमें? क्योंकि मेजर जितने भी चार्ज कैरियर्स होते हैं ट्रांजिस्टर के वो एमिटर प्रोवाइड करता है। एंड what happens to the base is the lightly doped and smallest in size. It receives the emitter, and it like the only job of the base is to make the two junctions depletion, like PN junctions बोलते हैं. Like you can imagine a transistor as a diode connected back to back. Like it will be something like this. You will have a diode. Okay, so this is a representation of a PNP transistor. Similarly, NPN transistor can be denoted like this. This is one transistor, this is one diode, and this is other diode. Okay, so the only work of this base is to create the depletion region. Okay, now collector is the part which is moderately doped and biggest in size because it collects the charge carriers from emitter. Now you can take the briefer look to the size comparison. Emitter, like base is the smallest, then emitter is the moderately sized, and then we have the collector. And doping concentration is emitter has the highest concentration, followed by collector and then base. Most of the charge carriers go from emitter to collector.